Hello, welcome to all of you in this session of Sociology, lecture 6। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी and some important classifications of societies. And after that, there are 10 MCQs based on these three topics to check your evaluation, what you understand, what you got from these three topics today. Let us move ahead. Society. Two main features of societies are: it rests on consciousness of kind. क्या मतलब है इसका? It rests on consciousness of kind. Society rests on consciousness of kind. This feature of the society was defined by Giddings, and he mean it that a state of consciousness in which any being, whether high or low in the scale of life, recognizes another conscious being as of like kind with itself. जब तक न सोसाइटी में एक दूसरे को हम पहचान लेंगे, जो भी हो सोसाइटी में रहता, चाहे बादशाह हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आर्मी वाला हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे डॉक्टर हो, जब तक न हम एक दूसरे को पहचान नहीं लेंगे, एक दूसरे की अटेंशन, एक दूसरे के वैल्यूज़, एक दूसरे की प्रेजेंस को नहीं समझेंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि हम सोसाइटी में नहीं रहते हैं। And second feature of society is it is universal and all pervasive. It is universal and all pervasive. मतलब जहाँ भी दुनिया में जाओगे, आप पाओगे कि वहाँ किसी न किसी तरह सोसाइटीज़ एग्जिस्ट हो रहे हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। इट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह मौजूद है। एंड ऑल परवेसिव मीन्स सोसाइटी में ये पावर है कि वो एक इंडिविजुअल को परस्यूड करते हैं, किसकी तरह? टू ओबे लॉज, customs and norms of the society. Now, characteristics of the societies. जो पहला कैरेक्टर है सोसाइटी का या एलिमेंट, लाइकनेस। मैक्लेवर says society means likeness. सोसाइटी means लाइकनेस। मैक्लेवर ने ये कहा कि सोसाइटी का मतलब ही लाइकनेस है। इट इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बुनियाद ही लाइकनेस है। जब तक न वहां सोसाइटी में लाइकनेस नहीं होगी, सोसाइटी नहीं बन सकती है। To remember that sense of likeness was focused in early society on kinship, and in modern societies the conditions of social likeness have broadened out in the principle of nationality or one world. पहले जो ये लाइकनेस देखी जाती थी, ये स्मॉल छोटी छोटी सोसाइटी में
उसकी पहचान थी लाइकनेस की वहाँ स्मॉल सोसाइटीज़ में। अब इसका स्कोप जो है इट ब्रॉडन इट टू नेशनलिटी और वन वर्ल्ड। अब हम ये कह सकते हैं कभी कभी मैं इस कंट्री का बंदा हूँ, इस मुल्क का बंदा हूँ, तो कभी मैं ये भी कह सकता हूँ मैं इस दुनिया का बंदा हूँ। A country constitutes a society and world constitutes the greatest society. किसी न किसी जगह कोई न कोई लाइकनेस इंटीग्रेट्स पीपल टू कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। एक महल्ले में ज़्यादा लाइकनेस होगी, तो अगर हम गाँव में जाएंगे, फिर गाँव में 4 महल्ले होंगे, 5 महल्ले होंगे, उनमें थोड़े थोड़े उस लाइकनेस की इतनी इंटीग्रेशन ऑफ लाइकनेस नहीं होगी जितनी एक महल्ले में होगी। फिर जाएंगे एक शहर में, होगी लाइकनेस ज़रूर मगर इतनी नहीं होगी जितनी गाँव में होगी। फिर जाएंगे एक कंट्री में, होगी लाइकनेस ज़रूर मगर इतनी नहीं होगी जितने एक शहर में होगी। तो अगर हम दुनिया में जाएंगे, कोई न कोई लाइकनेस ज़रूर होगी। जो लोग नॉर्थ पोल में रहते हैं और साउथ पोल में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, कोई न कोई लाइकनेस होगी। सेंटर में रहते हैं, एंड दिस लाइकनेस इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी सोसाइटी। इफ देयर इज नॉट एनी लाइकनेस, then we could say that there is not any possibility of a society. Second characteristics of any society is social relation which is abstract. Society क्या है? Society is social relation. ये हमको देखी नहीं जाती है, it just feels. So it is abstract. It means that it is not something which can be seen, observed, touched or sensed, but an abstract feeling which simmered the fellow human beings with one another. To remember that society prevails wherever there is existence of social relationships. Where there are no social relationships, there is no society. Society is social relation and it is abstract. Third characteristics of the society is it is a permanent organization. It is a permanent organization. सोसाइटी जो होती है ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्यों? अगर हम दूसरे ग्रुप्स देखेंगे, एसोसिएशंस देखेंगे, तो वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो डिमोलिश भी हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है, नए ग्रुप्स आते हैं, नए एसोसिएशंस आते हैं। मगर एक सोसाइटी जो है इट इज परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। Remember, society is not born with any temporary objective to achieve, but its existence will be till this planet is inhabited by the human beings. Society will exist till the end of this planet. It is permanent organization. Fourth difference,
McLever observes primary likeness and secondary differences create the greatest of all social institutions, that is division of labor. मैकलेवर ने कहा है कि primary likeness, there are likenesses in society, and secondary differences, also there are differences, create the greatest of all social institutions. Create such an institution that is greatest of all. There are large number of institutions in our societies, and according to McLever, the greatest of all social institutions is the division of labor that is created by primary likeness and secondary differences. What is this difference and what are these differences important for the society? Yes, if there are like-minded people all in the society, then their social relationships would become very much limited. Then it is necessary there would be little reciprocity, little give and take in limited domain of social relationships. Difference in society is very important because it is difference which creates different occupations, what we call occupational diversification, and this occupational diversification creates later stratification, and which is very important for a society to be balanced and in equilibrium manner. So difference is very much important in society, but remember, differences are subordinate to likeness. That is why McLever observes and said primary likeness and secondary differences create the greatest of all social institutions, that is division of labor, occupational diversification, डिवीजन ऑफ लेबर. हमने सोसाइटी में हर एक को अपना अपना काम सौंप दिया. कोई नाई का काम करता है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है. हर एक अपना अपना काम करता है अपनी अपनी स्किल के हिसाब से, अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से. दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. ये डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली दुर्खिम का कंसेप्ट है. उसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सोसाइटी. अगर हम देखेंगे अपनी सोसाइटी में, वी आर इंटरडिपेंडेंट. अगर सब इस सोसाइटी में डॉक्टर होंगे तो क्या यह सोसाइटी रन करेगी? यह सोसाइटी फंक्शन करेगी? नहीं. ऑल इम्पॉर्टेंट occupations, all occupations, I can say all occupations, whether low or high, are important for the functioning of the society, and all are interdependent. All people are interdependent. No one is independent in respect to social development. Sixth one is cooperation. Cooperation is also essential to constitute society. Remember that without cooperation no society can exist. It is cooperation
which avoids mutual distractiveness and results in prosperity, development and economy. कोऑपरेशन के बिना हम सोसाइटी में नहीं रह सकते। कोई भी काम हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। जब कोऑपरेशन है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो अमन का माहौल होगा, पीस का माहौल होगा, डेवलपमेंट की बात होगी, प्रॉस्पेरिटी की बात होगी। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट conflict. Conflict is seventh characteristics of any society. कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी सोसाइटीज में, कुछ पावरफुल लोग हमारे रिसोर्सेज को कब्जा कर लेते हैं, फिर उनके खिलाफ अपनी राइट्स के लिए हमें उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। There are different ways for it, and this generates conflict, either direct conflict in which we are involved physically, or indirect conflict in which we can take assistance from court, laws and other things. And next characteristic of the society is competition. Competition is important characteristic of the society, because without competition there would be dullness, laziness, and there would be not professionalism. एक कारीगर काम करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छा से अच्छा काम करे ताकि उसको सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए यही करना है उसको कि जो दूसरे कारीगर हैं उनके बरक्स, उनके अगेंस्ट अच्छा से अच्छा काम करना है। दिस interest generates competition among the people in the society, which develops into prosperity and more social development, or we can say holistic development. Accommodation. Accommodation, कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, अगर ये सोसाइटी का मेंबर है, सोसाइटी को इस बंदे को अडॉप्ट करना है, अकोमोडेट करना है, उसको अकोमोडेशन देनी है। किसी भी सोसाइटी में जो भी उसके सिटीजन्स हैं उस सोसाइटी के, उनको अकोमोडेट करना उस सोसाइटी की ड्यूटी है। सोसाइटी में जगह देना, उसके सिटीजनों को उस सोसाइटी के जो लीडर्स होंगे, लॉज होंगे, कस्टम्स होंगे, उनकी ये जिम्मेवारी है कि उन लोगों को सोसाइटी में जगह देना है, रहने देना है जो सोसाइटी के मेंबर होंगे, अकोमोडेट करना है। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, जो भी कस्टम्स है, जो भी लॉज हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी मोरल्स हैं, जो भी हैबिट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, तो
सोसाइटी को ये ड्यूटी बनती है कि उनको एक्सेप्ट करे, उनको रेस्पेक्ट करे। इन इंडिविजुअलों को एसिमिलेट करे सोसाइटी में। उनको ऐसा न लगे कि वो सोसाइटी से बाहर है, बल्कि they should feel they are integrated with the whole. That is known as assimilation. And last one is sociability in society essential. Sociability in society essential. इसका मतलब क्या है? एक इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता है। एक इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता है, और यही एक इंसान सोसाइटी को क्रिएट कर सकता है। Neither society is possible without human beings, nor an individualism or a person, and its existence is not possible without society. Let us see now types of societies. First type here is Gemeinschaft and Gesellschaft. These concepts were developed by F. Tönnies, Ferdinand Tönnies, usually translated as community and society respectively. Gemeinschaft को usually कहते हैं community. It is near and equal to community and its characteristics. And Gesellschaft is usually called society. But Gesellschaft is almost equal to association also. So F. Tönnies gives us two types of societies, Gemeinschaft and Gesellschaft. Gemeinschaft or community is defined as intimate, private and exclusive living together in a localized group and have a feeling of belonging to one another. These are characteristics of Gemeinschaft or community. What? These are intimate. They feel one. All the people feel one, belonging to one community. Private. They share private values. They do not allow outside communities to interfere in their privacies. And exclusive living together. Most of they live together in a localized group. They stay in a geographical area. Dominated only these people which constitutes community and have a feeling of belonging to one another, and there is a feeling of we feeling. They feel they are all one, belonging to one community, and have feeling of we feeling. Gesellschaft, usually translated as association, represents relationships that are specific, partial and utilitarian. Gesellschaft is near and equal to association. And association is made for a specific purpose. There is no clue of geographical area, and different people can create an association. But for a community, the people feel one and they are exclusive living together. Gesellschaft or association is for
is meant for temporary purposes, and they have end also, but communities have no end. They are flourishing. Mechanical and organic solidarity. This these types of societies based on mechanical and organic solidarity were given by Durkheim, and Durkheim distinguished these two types of societies on the basis of division of labor, collective consciousness and set of laws in a given society. दुर्खीम ने हमें दो तरह के सोसाइटीज़ के बारे में बोला, एक मैकेनिकल सोसाइटी एंड अनदर वन इज ऑर्गेनिक सोसाइटी। किस बेसिस पर उसने ये सोसाइटीज़ को इन सोसाइटीज़ को डिवाइड किया? डिवीजन ऑफ लेबर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड सेट ऑफ लॉज। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? हमारी सोसाइटी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनका अलग अलग काम है according to their skill and ability, that is division of labor. collective consciousness, जो फीलिंग है उस सोसाइटी में, that we belong to one, we are integrated to a whole, we have likeness, we are for each other, we have only one mission and purpose, that is collective consciousness. And set of laws in a given society, the norms, the morals, the laws in a given society. These three things trigger the Durkheim that distinguished societies into two types, that is mechanical and organic solidarity. What is mechanical solidarity, or what are characteristics of mechanical society? Remember, please note down these things. This a mechanical society is based on homogeneity, likeness, and mental resemblance. That means in their mind they think likeness. Communities are uniform and non-atomized with shared values. Mechanical societies develops out of likeness. They have strong collective consciousness and they have simple social division of labor. There are presence of repressive laws. There are presence of repressive laws, and most of them are primitive societies. Now, if we see organic societies based on organic solidarity, the first most character of this society is there is increasing differences with individualistic and different values. These societies develops out of differences. There is weak or peripheral collective consciousness. There are complex or intercaste social division of labor. Presence of restitutive law, and it represents
modern society. So we can say Durkheim's mechanical society is equal to primitive society and organic society is equal to modern society. Militant and industrial society. Spencer provided these types of society. According to Spencer, militant society is characterized by compulsory cooperation. स्पेंसर के मुताबिक जो मिलिटेंट सोसाइटी होती है वहाँ कोऑपरेशन एक अहम चीज़ है. इट इज़ कंपल्सरी एंड दिस सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड आल्सो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. जो मिलिटेंट सोसाइटी होते हैं वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है. It is equal to autocracy, a rigid system of stratification and in the militant society individuals exist for the benefits of the society, state or society. तो मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है या कोई काम करता है वो किसके लिए है, दैट इज बेनिफिट ऑफ द स्टेट. अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे दैट इज मिलिटेंट सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी. militant society and industrial society who have given these two types of society, differentiated between two types of societies, Spencer. अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेंगे, रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी कोऑपरेशन. यहाँ कंपल्सरी नहीं है, यहाँ वॉलंटरी कोऑपरेशन है. यहाँ फ्री ट्रेड है. फ्री ट्रेड जिसको चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, कौन सा कारोबार कर सकते हैं. लॉस ऑफ इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, independent voluntary organization, a relatively open system of stratification. और इन सोसाइटीज में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है. पावर जो होता है वो लोगों के पास होता है, वो सेंटर में नहीं होता है. और अगेंस्ट मिलिटेंट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल्स, न कि इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ स्टेट. मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता है, इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट. लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल्स. उसके बाद आता है फोक एंड अर्बन सोसाइटी. हु हैज गिवन अस these types of societies, Radfield. Folk societies. These societies are relatively more isolated, homogeneous, and traditionally organized, and less secular and individualistic. These societies are relatively more isolated. ये जो फोक सोसाइटीज होते हैं ये आइसोलेटेड होती हैं किन से, फ्रॉम बिगर एंड मैन सोसाइटीज से. छोटे छोटे महल्ले, छोटे छोटे गांव जो दूर दराज में रहते हैं, जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं. होमोजीनियस, वहाँ जो लोग रहते हैं वो होमोजीनियस है. दे आर लाइक माइंडेड, दे थिंक लाइकनेस,
उनके दिमाग में एक जैसा ख्याल निकलता है, एक जैसा सोच है, उनका कल्चर एक जैसा है। एंड ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज्ड, और जो ये सोसाइटीज़ हैं इनमें जो कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, मोरल्स हैं, वो पुरानी जनरेशन से आए हुए हैं। देयर इज लेस मॉडर्नाइजेशन, दे आर ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज्ड एंड लेस सेक्युलर। और जो ये सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा सेक्युलर नहीं है, मतलब उनमें वो ज़्यादा एम्पिरिकल एविडेंसेस पर अपना राय नहीं रखते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस को नहीं मानते हैं, वो ज़्यादा ट्रेडिशन को मानते हैं। और दे आर मोस्टली रिलीजियस पीपल, लेस सेक्युलर। अर्बन सोसाइटीज में क्या होता है? हाई पॉपुलेशन, predominance of non-agricultural occupations and heterogeneous population। फोक सोसाइटीज़ में होता है होमोजेनस पॉपुलेशन, अर्बन सोसाइटीज़ में होता है हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन, और अर्बन सोसाइटी में होता है हाई पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, शहर, टाउन। प्रीडोमिनेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, ज़्यादातर लोग शहर या किसी कस्बे में, टाउन में क्या काम करते हैं? इंडस्ट्री के साथ होते हैं, शॉप्स के साथ होते हैं। दैट मीन्स देयर इज प्रिडोमिनेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। अर्ली सोसाइटीज एंड मॉडर्न सोसाइटीज, these types of societies were given by Anthony Giddens, actually Anthony Giddens। उसने दो तरह के सोसाइटीज को डिवाइड किया, अर्ली सोसाइटीज एंड मॉडर्न सोसाइटीज। अगर हम अर्ली सोसाइटीज पर नजर डालेंगे तो पहली जो टाइप उसने बोला वो है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। उसके मुताबिक ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, उनकी जो ओरिजिन है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये 50,000 BC से टू प्रेजेंट। अब 50,000 BC, बिफोर क्रिस्ट, टू प्रेजेंट, क्या आज भी ये सोसाइटीज एग्जिस्ट होते हैं? यस, बट दे आर एट एक्सटेंट। अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अभी भी किन में इंक्लूड हैं? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में। इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर स्मॉल इन नंबर, they gain livelihood from hunting, fishing and from edible plants। दूसरी जो टाइप बोली एंथोनी गैंडिनस ने, दैट इज पेस्टोरल सोसाइटीज। उसके मुताबिक 12,000 BC टू प्रेजेंट, ये भी अभी कुछ अफ्रीका के या बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये एग्जिस्ट होते हैं। तो इनके खास कैरेक्टर ये हैं, दे आर
dependent on tending of domesticated animals for their material subsistence. Actually, there are a few hundred people to many thousand people in the range, and they are ruled by chiefs and warrior kings, which one is pastoral societies. उसके बाद आता है एग्रीग्रेन सोसाइटीज 12,000 BC टू प्रेजेंट. इनके कैरेक्टर जो हैं बेस्ड ऑन स्मॉल रूरल कम्युनिटीज without towns or cities. They gain their livelihood through agriculture, and this profession is almost supplemented by hunting and gathering. उसके बाद traditional states or civilizations 6,000 BC to the 19th century. Actually, these traditional states have almost disappeared. There is no traditional state now. These were based largely on agriculture, and it is also known that some cities exist where trade and manufacture was concentrated. They were very large in size, some numbering millions of people. Societies of modern world. First world societies, 18th century to the present. These societies are based on industrial production and generally free enterprise. Majority of people live in towns and cities. Second world societies, early 20th century to early 1990s. Based on industry, these society were based on industry, but the economic system is centrally planned. In these societies, economic system was centrally planned. Small proportion of the population worked in agriculture. Most live in towns and cities. Now there is third world societies, 18th century to the present. The characteristics of these societies are like the population mostly work in agriculture using traditional methods of production. Some agricultural produce sold on world markets. Newly industrializing societies, 1970s to the present. Former third world societies now based on industrial production and generally free enterprise. In these societies, majority of people live in towns and cities. A few work in agricultural pursuits. अब हम कुछ अहम क्लासिफिकेशन देखेंगे सोसाइटीज के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. दुर्खेम ने जो क्लासिफिकेशन दी है सोसाइटीज की, उसने बोला जो
पहली टाइप है उसके हिसाब से सिंपल सोसाइटी, फॉर एग्जांपल होड़। सिंपल पॉलीसेगमेंट्री सेकंड टाइप है उसकी दुर्कीम की, इरकॉस सोसाइटीज। थर्ड सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंट्री एग्रीग्रेन सोसाइटीज which are mainly dependent on agriculture. Doubly compounded polysegmentary societies that are modern societies. Horde, Iricus societies, agrarian societies and modern societies. Spencer gives us 4 types of societies. Simple society, he represents it with family. Family is a simple society. Compound society, when more families join together, they form a compound society that we call Gotra. Doubly compound society, tribal society, when more Gotras combine, they form tribal society, a big large. Triply compound society, nation state. And these tribes, these states, when joined together, they form a nation, or we can say a state. This classification was given by Spencer. As many society based on status, he represented this type of society with simple society. He called it simple society. The society which is based on status, he called it simple society. मतलब जो पुराने ज़माने के सोसाइटीज़ थे, उनके जो लीडर थे, फिर उनके बेटे वो लीडर बनते थे on the basis of status. Society based on contract, industrial और modern society. आज तो कोई लीडर बनता है किसी एग्रीमेंट के तहत। अगर तू अच्छा काम करेगा तो लीडर बन सकता है, हमें मंजूर है। अगर नहीं तो किसी टाइम के बाद आपको सरेंडर करना होगा, आपको क्राउन छोड़ना पड़ेगा। हावर्ड, सेक्रेड सोसाइटी एंड सेक्युलर सोसाइटी. Sacred society is equal to a religious society. Secular society is equal to non-religious society, which is based on science and facts. Sacred society is based on scriptures and sayings of priests and religious people. Sacred society is equal to old societies and secular society is equal to modern societies. कार्ल पोपर, उसने जो हमें क्लासिफिकेशन दी है, ट्राइबल सोसाइटी एंड ओपन क्लोज्ड सोसाइटी. Sorry, it is open society. It is only open society. Tribal society is equal to tribal society is traditional society and open society is equal to modern society. यहाँ पर rigid rules होते हैं, यहाँ पर restrictive rules होते हैं. The rules created by society, people of society, with the agreement, with the contract. But in tribal society, these rules and regulations, customs and norms, most are created by the chiefs, autocrats. Karl Mannheim, organized society, general society, historical society. Karl Mannheim, organized society,
society which is planned, organized. General society in which everything is possible, everyone is accepted, everyone's opinion, idea is experimented. Historical society, ancient society which have important historical importance like Ayodhya, Makkah, Karl Marx. Karl Marx distinguished our societies into four types: primitive society, ascetic society, ancient society, feudalistic society. Primitive society are traditional societies which are based on traditional customs, rigid laws and mores are there. Asiatic societies, he differentiated it from Western culture. Ancient societies, these are societies after primitive societies. These ancient societies were mostly different from primitive societies, as primitive societies were hunting and gathering societies, but there was some development in ancient societies. And fourth one is here feudalistic society. These were societies when there were kings and lords. Feudalistic societies were created around the land होल्डिंग्स, जिसके बाद ज़्यादा ज़मीन था वो इतना ताकतवर था, जिसने ज़्यादा काम किया बादशाह के लिए, लॉर्ड के लिए, उसको उसी हिसाब के साथ ज़मीन दिया जाता था. ये these were characteristics of main characteristic of feudalistic society. अब कुछ MCQs हैं, 10 MCQs जो आपने अभी लेक्चर पढ़ा है उस पर 10 MCQs हैं. Let us move ahead. The first MCQ here is, what is the essential prerequisite of society according to McLeod? क्या आंसर है इसका? Yes, here is answer. Likeness. Second one is, how does Durkheim distinguish between two types of societies? Based on Gemeinschaft and Gesellschaft, by mechanical and organic solidarity, militant and industrial, folk and urban. What is the answer? Yes, the answer is by mechanical and organic solidarity. The third question on your screen is, according to Spencer, what type of society is exemplified by a family? According to Spencer, simple society, compound society, doubly compound society, or triply compound society? Simple society. Which concept introduced by Tony's refers to intimate, private, and exclusive living together in a localized group? According to Tony's, remember Tony's gives us Gemeinschaft and Gesellschaft. So Gemeinschaft is right answer. In Redfield's classification, what characterizes urban societies?
isolation and homogeneity, traditional organization and less secularism, high population and non-agricultural occupations, heterogeneous population and secularism. The right answer is high population and non-agricultural occupations. During which period did the traditional status or civilizations exist? Traditional status or civilizations? What you think is correct answer? Please. Yes, the answer is 6000 BC to the 19th century. What type of society characterizes the period from the 18th century to the present? According to the classification of world societies. Third world societies, first world societies, second world societies, newly industrializing societies. Yes, it is first world society. Which classification of societies is associated with Karl Popper's concept of open and closed societies? Karl Popper gives us open and closed societies which are equal to tribal and open society. Tribal society is considered closed society. According to Howard, what distinguishes a secular society from a sacred society? हवार्ड के मुताबिक सेक्युलर सोसाइटी को कौन सा चीज़ डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश करता है किससे? सेक्रेड सोसाइटी से. ट्राइबल एफिलिएशंस, सोशल कंट्रैक्ट, status based organization, non-religious nature. Yes, it is non-religious nature. Which societies are included in Karl Marx's classification? Karl Marx's classification में इन ये सोसाइटीज आते हैं या नहीं आते हैं? अगर आते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Primitive, ascetic and ancient. Hunting, gathering, pastoral and agrarian. First world, second world and third world. Sacred and secular. Yes, it is primitive, ascetic and ancient. Mention your score in the comment box and I request you please subscribe this channel. It would be your most kindness. Thank you very much. Stay blessed.